Okay, guys. So listen, sir. So today tutorial is based on the image processing, and we have 5 objective today. And I have already copied one folder named tutorial 3 on all of your desktop. So I have already copied the image, and we have downloaded the images software, and the MATLAB is already downloaded. So the first object is to find out the capillary diameter using image processing. So I have already downloaded some images in the folder. So first you have to open image in the images software. Okay. So the first step to open the image from that folder. Anyone image? Do it. In the Gyan folder. Open the Gyan folder. So you can see images. So the open one of the image in the Gyan in the image software, and then you can see there is 4 lining. So the okay, how to say? So we know the outer diameter of the tube, that is 7 mm. So first take the straight line and set the scale as 7 mm. First take the straight line, select the straight line from the dot box. Straight line, select the straight line. Click on the straight line in the toolbox. ये बाहर का दिख रहा है ना जो अपना हाँ इमेज से कहाँ इमेज खोलो ना पहले भाई ये इमेज ही खोले हाँ इसमें इसको कट करो आप पीछे ये भी कट करो ये ट्यूटोरियल 3 जो है इसमें है नहीं क्या इमेज पहले ओपन करो इमेज उसमें जाके ना ठीक है ये ना ये नोन डिस्टेंस है 7 mm. So initially give the distance 7 mm. So that is the tube capillary of 2 mm. So we don't know the exact inner diameter of the capillary. So first we have to give initial distance, and we know the outer diameter of the tube, that is 7 mm. First select this and go on the analyze. Okay, analyze. Okay. And set scale. After drawing the line, go to the analyze option, then set scale, and in the set scale give the known distance, and the known distance is 7 mm. After setting the scale, then find out the inner diameter of the tube. You can see the one slug is going on from the capillary. You can give the unit as mm. Okay, then find out the inner diameter of the tube. Yeah. Yeah, then that is 7 mm. Yeah. Then again, 70 line, then draw the straight line. Yeah. And control M. Control For the analyzing. Yeah. That is the inner diameter. Okay. Yeah. 7 mm ये नहीं, ये तो इनर डायमीटर है. ये क्या कर दिया तुमने इसको कॉन्टेक्स्ट वो दिख नहीं रहा तुम्हारा बाहर वाली जैसे वो दिख रही है ना उसमें 7 mm. Okay, after setting the scale, then find out the inner diameter of the capillary. So to see the result, you have to click Ctrl plus M. Then it will give you the inner diameter. तो इसको करो खींचो Ctrl M.
Okay, so what is the inner diameter? कितना आ रहा है? हाँ इतना यार 1.9. It's around 2 mm, maybe 1.9 or 2.1 maybe. हो गया ना ये तो? हाँ ये वाला 7 mm है। फिर इसकी इनर डायमीटर पता करना है, इसकी लेंथ पता करनी है, एरिया पता करना है। हाँ मेजरमेंट। ओके ये डायमीटर हुआ ना ये तो, उसको छोड़ो, उस पर ध्यान दो ना, वो लेंथ पे। हाँ ये लेंथ। अच्छा ये लेंथ डायमीटर को होता है 1.8. Okay, after completing the first objective, we will do the third objective first. So in the third objective, we have to find out the average length of the slug. Actually, in the Gyan folder, we have around 30 or 40 images. So you have to select every image and then find out the length of the every slug. Then after finding the length of every slug, you have to find out the average. Okay? Yeah. So one by one, open all the images and then find out the length of the slug. Okay. सबका सब उससे हो गई So open every image one by one. So in the yeah then we will discuss in the MATLAB. So this is yeah. So you can try on at least 3 or 4 images. Okay, in some images slug is not complete, so please don't open that image. Only that is still मिनट में mm, तो एरिया आएगा ना वो mm स्क्वायर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई का क्या वैल्यू आ रहा है हाँ ये इधर आ रहा है ना, लेंथ का है, लेंथ है, इन सबका एक एवरेज होता है, तो इसी का लेना है। वैसे ही जैसे एक ये स्लग है, अब ये स्लग जैसे जैसे कंटिन्यू हो जाना है तो उसका लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पता है इसकी लेंथ बता दी, जब ये ब्रेक हो जाए नया स्लग आ जाए तो वो ये भी नहीं। Actually, the length of the every slug is different. That's why we are finding the average slug length. Now in like in that case, that is one slug. Then select the second image only when that slug is passed on that line. Yeah. So do not need to select every time the same image. Like that is passed in that image. So you can select second one this image, then third one for this image. In the fourth one, both the slugs are coming together. So in 3-4 images, you can find out the average slug length. स्लग के मतलब ये वही टोटल नहीं पहले लेंथ तो निकालो सारे मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट स्लग जितने आ रहे हैं। इस तरीके से उसको मेरा डाया है ये डाया है हाँ मुझे डाया इनर डायमीटर। लाइन कितना मिलियन तुमने गलत किया होगा कुछ। शिफ्ट शिफ्ट
कंट्रोल एम करो, कंट्रोल एम Control M. इतनी है। एक मिनट अच्छे करो और मैं करते जाओ कंट्रोल है। हाँ लाइन ये लाइन डिफरेंट डिफरेंट स्लग की लेंथ निकालो, उसके बाद उसका एवरेज 5 मिनट एटलीस्ट 3 to 4 इमेजेस। या हाँ, ये क्या है ना प्रीति, जैसे इसमें पूरा स्लग है नहीं तो इनको ना इग्नोर मारो इन इमेजेस को ना। ये मैटलैब के लिए हैं जब हम अल्फा निकालेंगे, जिसमें पूरा स्लग है उसमें। स्लग सेम है तो लेंथ तो ले, इधर नहीं कर सारे करके हाँ एवरेज निकालो पहले। ये जो सेम है उसको बार बार नहीं करना। लेंथ और डायमीटर दोनों अलग हैं। हाँ ये है ना। हाँ हाँ, वर्टिकल तो डायमीटर हुआ ना। हाँ कहाँ पे करना है बताइए। ओके, first initialize gives the वो ये खाली है। then find out the length, this length, and that is the inner diameter of the tube. Yeah, 7 mm, and then पुष्पेंद्र, yeah, so यहाँ पे कहाँ पे पीपीटी कहाँ पे रखा है? ज्ञान में, tutorial 3 में एवं just a second, then again click on that. Okay, then control M, that is the ठीक है, एक बार ओपन करो, मैं एक बार बोल yeah, देता that is the inner diameter of the कर tube, देगा कुछ। 1.9. Okay, so it's around 2 mm. So sometimes because of the error, human error, it's coming 1.9 mm. So we know the now we can find out the after initializing. Shift, एक click on the shift. Yeah, साइलेंट हो जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए, देन दे कैन। विशाल को बोलो तो। that is the length of this, like 5.6 mm. Okay, everyone, Yeah, we are just going through the steps one. Okay, I will be giving a brief overview of the steps. Then everything is there in your desktop. The steps are there, images are there. So you can do on your own. And at the end of the session, you have to measure the length of the slug, or you have to measure the film thickness. Okay. So how we do basically, so this is in the third tutorial in the morning today, we have seen that we have, you probably recall the encapsulation I have shown you, the area is marked, right? So what we have from the image, we have calculated how much encapsulated area is there within a slug. Okay, so for such kind of analysis, what you need to do, you can do it with ImageJ, you can do it MATLAB. So the first instruction given to you in the slide is for the ImageJ. So ImageJ is a free software that you can download from internet, install it in all your desktop. ImageJ is being already installed. Okay. Now this software, how does it work? You have to load a image in the software first, a known image. So images are also given to you. Now this is required just like in the previous tutorial of the goniometer yesterday. In the goniometer, the known distance is the needle diameter, isn't it? Last class we are giving that. Now in this case,
either you can give the pipe diameter that is known to us, okay, or any other reference point that will be known for your system. So once you can select the image, you can adjust the brightness, etc., convert it to grayscale. Then you have to identify this known distance first, and accordingly, what next step is, suppose you want to measure the length of the slug, so that you select, and the pixel will be getting converted to the corresponding length, okay, and that can be reported, and it can report in Excel also, okay. So there are in detail instructions are given. So since we are doing with some video camera, so first the video we have taken, it need to be converted into frames. That is also being reported to you, okay, in slide 3. So another one is given in the MATLAB processing. So MATLAB processing, again the same type of thing. You have to open the initial image, then you have to pre-process the image, convert to grayscale, filter the noises, okay. Then you have to do some thresholding, segmentation, everything is given in detail. So you just follow the steps with the command that is given to you, and finally you can able to do the necessary calculation that is mentioned in the tutorial sheet, okay. Hope this will work. So you may start, and if you have any difficulty, let us know. Yeah, so that is not the complete slug, so ignore that image. Okay. So you need to import more images. You can find out the whole slug in a one frame. Like, Yeah, this one. yeah, Okay. so you can calculate for this one. We have to measure that's all right or not? Yeah, for now. ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में इतने का यूज है नहीं। जैसे अभी इसमें देखो ना, अभी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, तो इसका एवरेज लेंथ कितनी आएगी, कोई स्लग छोटा है कोई बड़ा है। Not able to close this one, this image. The double images has been opened. हो गया ये। दोबारा खोल। Can open the second. हाँ देखा ये इसके बाद अब दूसरी इमेज है ना जिसमें डिफरेंट है लेंथ। ये खुला हुआ है, इसमें मैंने चेक करा है। सारी मैंने देखा लगा दी। जैसे कि इसमें अभी इसके बाद है ना, इसमें स्लग डिफरेंट है, इसकी लेंथ निकाल ली, इसमें स्लग डिफरेंट है, इन दोनों की लेंथ निकाल ली, उसका एवरेज निकालना। सेट वैल्यू करेंगे वो की 7 mm हाँ। ना। वो 7 mm जैसे इसके लिए भी करोगी ना, तो ये पता ही है इसकी 7 ही है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस ह्यूमन एरर आता है, वो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे कोई 1-2%। तो इसमें दोनों स्लग की लेंथ डिफरेंट है ना, तो ऐसे सबकी निकाली बट हाँ। जैसे वो मैंने ब्रेक में इमेज दिया है, अब जैसे एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ऐसे होता है स्लग लेंथ, इसमें देख रहे हो मेन बराबर सी है लेकिन पूरी बराबर नहीं है स्लग लेंथ, है ना। तो जैसे इसकी एकदम डिफरेंट है और इसकी बड़ी है,
लेकिन ये इनकी स्लग लेंथ बराबर है, तो इसमें क्या करते हैं हम बहुत सारी सब की स्लग की एक ही इमेज में ले लेते हैं, स्लग लेंथ निकाल के उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो फिर बोलते हैं कि ये है एवरेज लेंथ उसमें स्लग की। ये जाओ एडजस्ट, यहाँ से जैसे भी तुम्हें चेंज करना है ये पूरा चेंज कर सकते हो, समझ लो। ऑटो करोगे तो ये खुद से सही से करके दे देगा। अच्छा, फिर इसको टेस्ट करना है, फिर अप्लाई करना है। नहीं, ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इसको मतलब यहाँ से कैंसिल कट कर दे तो। हाँ, अप्लाई मत करना, कैंसिल करो, कट करो। अप्लाई नहीं किया तो वो नहीं होगा ऐसे जब सेव करोगे मैं। किस गन वन नंबर किस गन कैसे करते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट देखो। इनमें जाके एडजस्ट, अब ऑटो करना है तो खुद से करके दे देगा, ऑटो नहीं करना है ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, तुम्हें जितना चेंज करना है उसमें इमेज में जैसा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मतलब साफ करने के लिए ना इमेज को, तो अभी क्लीन होती जा रही है। और एवरेज एक ही का निकालना है ना। हाँ ये एवरेज ऑफ पूरी हाँ। कितना है दिया था स्पेस और फोल्ड वाला वो तो फिर वो उस टाइप से होगा। ये भी है, इससे भी कर सकते हो, दो फंक्शन है इसमें एरिया निकालने के लिए, पहले इसका फ्रेम का एरिया कैलकुलेट करो पूरा। हम्म रेक्टेंगल है ना, इसको एरिया दे दो फ्रेम का, करो कंट्रोल एम, ये एरिया आ गया इस पे, ठीक है ना। और इसको लेंथ इंटू ब्रिथ से करके देखो एक बार, अगर ये चढ़ाना है ये दो तरीका होता है इसमें इमेज करने का, वो लाइक करता है खुद ही, वो उसको रिकैप्चर करता है। वो मैटलैब में है ये इमेज, इसमें भी है। देख लो अगर है तो, मुझे तो नहीं मिला कभी, मैंने उसमें किया था हो यार। सकता है किया हो। तरीका क्या कह रही हो? सबको समराइज अगर देते तो अब वो इमेज सीक्वेंस पहले लेंगे ना तब निकाले, अभी तो इमेज ही एक है तो वो बहुत सारे के निकाल दिए ना आपकी को जब करे तो ये सब देते ही केवल डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल में जाके, तो ये उसमें एक्सेल में डाउनलोड हो जाती है, वहाँ पे एवरेज निकाल सकती हो, फाइल है ना। देता है वो हाँ वो भी इसका निकाल देगा मीन जितनी, हाँ सबका निकालेगा। निकाल कैप्चर हाँ हो गया इसको प्रोसेस क्या इसका ये सीक्वेंस लाने का, इनको लाना है सर, इमेज मेरा तो सीक्वेंस अगेन का लाना है सर। फाइल में हाँ, इंपोर्ट इम्पोर्ट इमेज सीक्वेंस इमेज सीक्वेंस। जहाँ भी जाना है, हाँ ठीक है, ज्ञान वही तो है ज्ञान। अब ये तो है आगे सर एक बार। आगे करो, डेस्कटॉप 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 ट्यूटोरियल 3 ज्ञान, आगे हाँ सर। लोकेशन वगैरह। हाँ नहीं सर, इसमें सही नहीं, ये तो मेरी वाली थी, इसमें जहाँ पे सेव किया हूँ ना वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आप कॉपी कर लो। हाँ तो किया है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, क्लिक करो, क्लिक इस पे, PWD कर लेते हैं। हाँ ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। लेकिन ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। कैसे? जैसे फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये तो हम्म तुम्हारे कोड में बैकवर्ड स्लैश है, ये तो सारे बैकवर्ड स्लैश है ना। तो मतलब ये यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से क्लिक हो जाएगा ये कैसे? हाँ वो हो नहीं रहा है यहाँ से, वही ना सर, वो विंडो में हो जाता है ना, विंडो में करते हैं, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं भी इसमें। वही तो सोच रहा हूँ ठीक है।
इसको सिलेक्ट ही अपने को ये करना है ना इसको। अगर इसको रिलेट करना है को नहीं नहीं वो बाहर का है, उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको क्रॉप कर लो, तो इसमें जो हमारा एरिया जिस पर काम करना है मेनली यही है, हमें तो 2 mm का जो इनर डाया है ना, तो वो डस्ट वगैरह लगी हुई थी। देखिए उसको तो जाओ actually use this so that will give some extra area, my area. Okay. Total 6 length will be, and every time we have to count one. सेम ही वीडियो की रेडी है ना, बात को सेम ही रखनी है। हाँ हाँ।